Adab and welcome to the week that was with Saba Jamal. In this program, we discuss news and current affairs of the past week and see what's making headlines in and around Pakistan. Today, just to do that, to discuss all these issues and everything that's been happening, I have Mr. Hamidullah Jan Afridi, who is the Minister for Environment from FATA, which is the federally administered tribal areas. Welcome to my show, Hamidullah. Thank you. I've been trying to get you for a very long time. I finally have you on my show. I've came to know that, and I'm sorry for that. Okay, I'll go straight into news and then we'll keep going back and forth. Pakistan enters Zardari era. Asif Ali Zardari has taken oath as the president of Pakistan. What do you feel about all this, and do you feel he'll be able to resolve all the issues that are existing? Because people are very uncertain as to what is going to happen now. Well, Sabah, to one extent, it is good, that the same party which has a prime minister as well is becoming into presidency as well. Because previously we have noticed that people from two different school of thought always have a tussle between them, and on a small issues like, even assemblies are dissolved. So keeping in mind that, it is good that the same political party that is into the presidency as well now. And I think Zardari is a capable person, and I'm sure and I'm hopeful that he'll be able to do a lot, in tackling the issues which are presently confronted by the Pakistan. So problem यहाँ पे लोगों के दिलों में ये आ रही है कि maybe they feel that maybe it'll become more like a presidential rule and he'll eventually take control because he's heading the party. He's now the president, and apparently he also tells the prime minister what to do. So he has way too much control, and people feel that it might be misused at the end of the day. What do you think on that? Well, I don't think so, because he's the co-chairman of the party, and he had involvement in every issue even before coming into presidency. तो ये कहना कि अब उसके पास कंट्रोल आ गया है, तो I don't agree. Positive, negative तो होता है लोगों के definitely. और the thing is कि अगर if the power is with the prime minister or with him, तो obviously वो उसके consultation से होगा. What I think कि ये basically अब ज़्यादा अच्छा हो गया है. कम से कम अब हमारे पास वो बहाने नहीं हैं कि हम कहें कि जी प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट या पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को स्टॉप कर रहा है, करने कुछ नहीं दे रहा है, या पार्लियामेंट प्रेसिडेंट का नाम लें कि जी उसकी वजह से. तो आई डोंट थिंक सो. मेरे ख्याल से बड़ा स्मूथली वो एक्सक्यूज तो खत्म हो जाएगा. हामिद कारजाई साहब आए हुए थे, प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान. दे हैड अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस. उसके रेफरेंस से, अफगानिस्तान के और आपके एरियाज़ के रेफरेंस से जो वहाँ पे आजकल एक्शन हो रहा है, ग्राउंड असॉल्ट बाय US लेड फोर्सेस, women, children among 20 killed in Waziristan. This is very unfortunate. I was previously in Senate as well, और उधर भी हम हमेशा ये शोर करते रहे कि जी खुदारा 20 पार्लियामेंटेरियंस हैं फाटा से, उनकी कंसल्टेशन से इन इशू को रिजॉल्व करना चाहिए, बिकॉज दे नो बेटर. वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स हैं. अब भी अगर आपने देखा हो, फॉर द लास्ट 10 days कोई 6-7 अटैक्स नेटो फोर्सेस से पाकिस्तान टेरिटरी में हुए हैं. और सरप्राइजिंग बात यह है कि उसमें एक भी हाई वैल्यू टारगेट नहीं दिखाया गया है कि हम कहें कि जी अलकायदा था, और मे बी देयर इंफॉर्मेशन इज़ नॉट राइट. और अमेरिका को पिछली गवर्नमेंट की भी यही कमज़ोरी थी कि वो इस बात पे उनको काहिल नहीं कर सके कि जी लेट अस टैकल इट, और हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या है और कैसे टैकल करना पड़ेगा. ये मेरे ख्याल से पिछली गवर्नमेंट की फेलियर रही. आप लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता जब वहाँ पे किसी किस्म का एक्शन हो रहा होता है? नॉट एट ऑल. प्रीवियसली तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि हमने हर फॉरम पे शोर मचाया, मीडिया पे, पार्लियामेंट के अंदर. अभी ये इस गवर्नमेंट ने चूँकि अभी आई है, कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने भी 3 prong पॉलिसी एरियाज़ के बारे में अपनी एक्सप्रेस की है कि 3 prong पॉलिसी से चलेंगे. और द गुड थिंग इज सबा कि इन्होंने ये एग्री कर दिया है कि जी वी माइट टेक द मैटर इन टू द पार्लियामेंट एंड लेट द पार्लियामेंट डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं. अगर इनके इंटेंशंस ऐसे ना होते तो ये फिर इसको ओपनली बताते ना मीडिया पे या लोगों में या कैबिनेट मेंबर्स को. लेकिन द थिंग इज़ कि इनके इंटेंशंस क्लियर है. दे वांट टू रिजॉल्व द इशू विद द कंसल्टेशन ऑफ पार्लियामेंट. तो पॉजिटिव चीज़ ये है कि जब पार्लियामेंट में ये बात आ जाएगी और उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगी, तो इवेंचुअली वो पॉलिसी अपनाई जाएगी जो मेजॉरिटी वहाँ कहेगी. तो द गुड थिंग इज़, और इनके इंटेंशंस यही हैं
کہ پارلیمنٹ میں لا کے ان کی کنسلٹیشن سے ہم آگے چلیں. تو اب you think they're moving forward in the right direction? ڈیفینیٹلی اور دے ہیو ٹو, کیونکہ پریویس گورنمنٹ پہ جو نکتہ چینی ہوتی رہی, میں خود ایک سینیٹر, بار بار میڈیا پہ اور ہر فورم پہ یہ ہم گلا شکوہ کرتے رہے ہیں کہ جی وائی آر وی ناٹ بین انوالوڈ. اگر یہ ایک صرف ٹرائبل کا ایشو نہیں ہے, پاکستان کا ایشو ہے اینڈ وی آر پارٹ آف اٹ, تو لہٰذا ہمیں کنسلٹ کیا جائے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے ابھی تک پھر جو بھی ایکشن یا جو بھی ڈیسیجنز لیے گئے ہیں اس وار آن ٹیرر کے حوالے سے, you have not been involved in it? Never. You've never been taken into confidence? No, never. Previous government کا تو یہ ایک بہت بڑا فلا تھا ان کا, and we don't understand کہ آخر کیوں ان سے چھپا کے رکھا گیا. اگر کوئی پرابلم ہے تو we do understand. اگر کوئی پرابلم ہوگی which is against the government, which is against our territory, which is against Pakistan, تو ہم خود سارے سمجھدار لوگ ہیں, we do understand. لیکن اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے, اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے, میرے خیال سے But is it because maybe they felt that you were breeding the Taliban, that's why they didn't want to take you into Not confidence? exactly, ان کو یہ تو نہیں ہوگا, لیکن maybe وہ they were unable to satisfy the West. ان کو شاید یہ چھپانا چاہ رہے, اور ان کے خیال میں شاید یہ ہو کہ جی ایسی بات نہ ہو کہ ہم ان کو بتا دیں اور لیک آؤٹ نہ کر دیں, which is not right. I don't think so. No, it isn't. It's totally incorrect. All the 20 people who are sitting in parliament are responsible people. اور چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کی بہتری ہے وہ obviously فاٹا کی بہتری ہے اور وہاں کے لوگوں کی بہتری ہے. تو کیپنگ ان مائنڈ کے کامن آبجیکٹیو ہے, وہاں بدامنی ہوں گی, لوگوں کو تکلیف ہوگا تو ہمیں تکلیف ہوگی, گورنمنٹ کو تکلیف ہوگی. اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارا کامن آبجیکٹیو ہے, اور until and unless ہم سارے مل بیٹھ کے اس ایشو کو ریزالو کرنے کا طریقہ نہ نکالیں بائی فورس, I don't think so کہ اس کا کوئی طریقہ ہے. That is true. On that note, we need to take a short break. We'll be right back.